गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया हैज ऑलवेज बीन नोन एज पीस लविंग कंट्री। इंडिया को हमेशा से पीस लविंग कंट्री के रूप में जाना जाता रहा है। हमारे पड़ोसी देश हम देखें तो सबसे पहले हैं नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका। अब हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। नेपाल, सबसे पहले हम देखते हैं नेपाल। नेपाल हमारा उत्तर में एक पड़ोसी देश है जिसकी कैपिटल है काठमांडू। यहाँ रिलीजन है हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। लैंग्वेज यहाँ की है नेपाली। फेमस पर्सनैलिटी यहाँ के हैं तेंजिंग नोर्गे। गवर्नमेंट यहाँ पर डेमोक्रेटिक है और नेशनल स्पोर्ट्स है डांडी बियाओ। Nepal is called the Amazon of Asia. Mount Everest is in Nepal. Lord Buddha was born in Nepal. Nepal's flag is non-rectangular. Nepal was never colonized. It was the last Hindu country. तो ये देखा हमने नेपाल की विशेषता। नेक्स्ट है चाइना। चाइना हमारा पड़ोसी देश है नॉर्थ में। इसकी कैपिटल है बीजिंग। रिलीजन है बुद्धिज्म। लैंग्वेज चाइनीज। फेमस पर्सनैलिटी जैकी चैन। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। नेशनल स्पोर्ट है टेबल टेनिस। चाइना की कुछ खास विशेषताएं। द मोटर यूज्ड इन बाइंग द Great Wall stone was made with the stick rice. Some Chinese police use geese instead of police dogs. Gunpowder was first discovered in China, where it was used to create fireworks. Paper was first invented in China around 105 AD and made its way to the Western countries through so-called Silk Road. ये हमने चाइना की विशेषताएं देखी। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद। रिलीजन मुस्लिम है। लैंग्वेज उर्दू। फेमस पर्सनैलिटी बेनजीर भुट्टो। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और नेशनल स्पोर्ट्स है हॉकी एंड क्रिकेट। चाइना की कुछ विशेषताएं। Karachi and Lahore are two important cities of the Pakistan. Pakistan have a Middle Eastern culture. Large deep sea port in the world. Highest paved international road. Second largest salt mine in the world. Largest irrigation system in the world. First Islamic country to attain nuclear power. The world's seventh largest standing force. The world's 26th largest economy, the world's largest man-made forest. ये चाइना की हमने विशेषताएं देखी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। रिलीजन इस्लाम। लैंग्वेज दारी एंड पाश्तो। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। Adam Shah Durrani unified the Pashtun tribes and founded Afghanistan in 1747. Afghanistan celebrates its independence on August 19th from Britain. Did you know that the world's two largest standing Buddhas once stood in Bamiyan and Afghanistan until the Taliban destroyed them in 2001? Afghanistan national game is called Buzki or in other words goat gambling. The largest city in Afghanistan is Kabul, the capital. Afghanistan is also rich in natural resources, with the main ones being natural gas and oil. Bhutan.
नेक्स्ट हमारा पड़ोसी देश है नॉर्थ का भूटान। यहाँ की कैपिटल है थिम्पू। रिलीजन बुद्धिज्म। लैंग्वेज दोजान का। फेमस पर्सनैलिटी जिंगमी केसर। Government, it has a king and a parliament too, whose members are chosen by people. भूटान की कुछ विशेषताएं देखते हैं। भूटान इज a democracy and constitutional monarchy. Bhutanese monarchy was founded in 1907. It held its first democratic elections in 2008. Agriculture is its major industry with rice, fruit, and dairy industry. Bhutan has the world's largest unclimbed peak, Gangakar Pyeonsan, a mountain so secret by the Bhutanese that the government has banned mountaineering on any peak above 19,685 feet. 54.3% of adults and 76.2% of youth in Bhutanese are literate. Plastic bags has been banned in Bhutan since 1999, and instead cotton bags are used to help conserve the country. The first foreign tourist was allowed into Bhutan in 1974. Bhutan is the only country to outlaw tobacco, effective 2004. Plastic bags have been banned in Bhutan since 1999. नेक्स्ट पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार। कैपिटल नैपई तौर। रिलीजन बुद्धिज्म। लैंग्वेज बर्मीज। फेमस पर्सनैलिटी ऑन्ग सान सू की। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। नेशनल स्पोर्ट यांग एंड चिलम। म्यांमार इनकी कुछ विशेषताएं हैं। In 2006, the capital of Myanmar was moved from Yangon, formerly Rangoon, to Nay Pyi Tawa. Myanmar depends on agriculture for more than half of its GDP. Rice is the major product. The Irrawaddy River in Myanmar is believed to be symbol of continuity. Myanmar has over 135 ethnic tribes and Burma is the largest one. Around 68% of the population is Burmese. During the British rule, it was the richest Southeast Asian country. Literacy rate in Myanmar is 83% and life expectancy is 57 years. अगला पड़ोसी देश हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश ईस्ट में हमारा पड़ोसी देश है। कैपिटल ढाका। रिलीजन इस्लाम। लैंग्वेज बंगाली। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। नेशनल स्पोर्ट कबड्डी। Bangladesh declares independence from Pakistan on March 26, 1971. Bangladesh has one of the largest coastal mangrove forests in the world. It forms part of the Sundar National Park, a World Heritage Site. Bangladesh was earlier known as East Pakistan. Hindus are the largest minority religion in Bangladesh at 10.5% of the population. Cox's Bazar, Bangladesh is the longest unbroken sea beach in the world. Bangladesh is home to the world's largest river delta. Bangladesh, the seventh most populous country in the world and the most densely populated. नेक्स्ट हमारा पड़ोसी देश है मालदीव्स। कैपिटल है माले। रिलीजन है सुन्नी इस्लाम। लैंग्वेज मालदीवियंस। मालदीव्स की कुछ विशेषताएं हैं। मालदीव्स वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय एन एलेक्सिव इंडियन प्रिंस। द नेशनल डे ऑफ मालदीव्स इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st of Rabi al Awal, the third month of the Islamic calendar. Maldives, which follows the British educational system, has a stunning functional literacy rate of 98%. Maldives, the smallest country in Asia. It is also the smallest Muslim country in the world.
The first underwater cabinet meeting was held in Maldives. The Maldives is the tallest country in the world. The highest mountain in the Republic of Maldives is located on the island of Wingwili in the Adu Atoll 2.4 meter. The economy of Maldives is heavily depend on tourism. नेक्स्ट हमारा पड़ोसी देश है साउथ का श्रीलंका. कैपिटल श्रीलंका की है कोलंबो. रिलीजन बुद्धिज्म. लैंग्वेज सिंहालास तमिल. गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक. श्रीलंका की कुछ विशेषताएं. He first established capital in ancient Sri Lanka was Anuradhapura and the era was known as Anuradhapura Kingdom. Sri Lanka is one of the world's largest tea exporters because the country has lots of waterfalls. Most of the Sri Lankan's electricity is powered by hydropower energy. Sri Lanka's national flag is said to be one of the oldest flag in the world. 92% of the people living in the country are literate. Sri Lanka gains full independence from the British in 1948. Sri Lanka was called Ceylon until 1972. धन्यवाद. अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक यू.